Hello friends, welcome all of you. Today in this video we learn the nursing care plan of puerperal sepsis या puerperal infection या postpartum infection। मीन्स आज हम वीडियो में puerperal sepsis या puerperal infection या postpartum infection का nursing care plan लर्न करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन puerperal sepsis। नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले हम पुerperal सेप्सिस का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं पुerperal सेप्सिस क्या होता है। पुerperal सेप्सिस इज डिफाइंड एज द इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट occurring at the liver or within 42 days of the postpartum। मीन्स puerperal sepsis मीन्स यहाँ जैसा कि टर्म में सेप्सिस मीन्स इन्फेक्शन इज प्रेजेंट देयर। In puerperal sepsis, there is genital tract infection present, mainly occurring after the delivery or labor, and it also present within 42 days of the postpartum period। Means puerperal sepsis means जो कि डिलीवरी या लेबर के समय होने वाला इन्फेक्शन जो कि जेनिटल ट्रैक्ट में होता है, और ये इन्फेक्शन बच्चे होने के बाद से 42 दिन तक 42 डेज तक हो सकता है, जो मेनली पुerperal सेप्सिस में काउंट होगा। और इसको हम पोस्टपार्टम पीरियड ऑफ पुerperal सेप्सिस इन्फेक्शन विद इन 42 डेज कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल डेथ। इस पुerperal सेप्सिस मैटरनल डेथ का एक मेन कॉज है। नेक्स्ट, इट इज़ आल्सो नोन एज पुerperal इन्फेक्शन और पोस्टपार्टम इन्फेक्शन। इसको हम पुerperal इन्फेक्शन या पोस्टपार्टम इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम साइन एंड सिम्टम एंड क्लिनिकल डाटा बेस्ड ऑन दीज वी basis our nursing care plan. The first, fever. Next, pain in lower abdomen and pelvis caused by the swollen uterus. Next, foul smelling vaginal discharge. Next, pale skin, which can be sign of large volume of blood. Next, chills. Next, feeling of discomfort, headache, loss of appetite, increased heart rate, nausea, vomiting, diarrhea, abnormal distension, rigidity and rebound tenderness, anemia and malnourished, और लास्ट है वेट लॉस। These are our clinical database. On these basis we make our nursing care plan. तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या क्या डायग्नोसिस तैयार करते हैं ऑन these database। नेक्स्ट, here this is our first nursing diagnosis और puerperal sepsis in nursing care plan। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो। तो सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप नंबर फर्स्ट, नर्सिंग असेसमेंट। एयर नर्सिंग असेसमेंट एयर हिस्ट्री ऑफ हाई रिस्क फैक्टर इन द prenatal, इंटरनेटल एंड postnatal period, assessment of the vital sign, assessment of the sign and symptom of infection। ये हमारा नर्सिंग असेसमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस for this, risk for spread of infection related to presence of infection, broken skin and traumatized tissue। And the next, goal and expected outcome, client will achieve timely healing and remain free of infection and reduce risk of complication। This is our expected outcome and goals। And next, nursing interventions and rational, specific rational and nursing interventions। first, देखते हैं मेंटेन स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग, इसका रेशनल होगा टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ पेरिनियल पैड्स एंड ड्रेसिंग।
रेशनल होगा इसका प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट नंबर थर्ड इंटरवेंशन डेमोस्ट्रेट एंड एनकरेज पेरिनियल केयर। इसका रेशनल होगा क्लीनिंग ऑफ द पेरिनियल, रिमूव कंटामिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं demonstrate proper fundal massage. It enhances uterine contractility and promote involution of the uterus. Next, monitor vital sign. Elevation in vital sign accompany infection. Next, encourage application of sitz bath. Sitz bath increase blood flow, promoting healing. Next, demonstrate perineal application of antibiotic cream as appropriate. Uh, is a rationale of this intervention eradicate local infection organism and to reduce risk of spreading infection. Next, administer medication as indicated, antibiotic, oxytocin and example methargin, anticoagulants, heparin. तो इसका रेशन होगा कॉम्बैक्ट एंटीबायोटिक कॉम्बैक्ट पैथोजन का ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीटोसिक्स और एग्जांपल methargin promote myometrial contractility and anticoagulant reduce the formation of the thrombus. तो ये था हमारा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान ऑफ पर्पेरल सेप्सिस एयर, risk of spreading infection related to presence of infection, broken skin or traumatized tissue. Means after the delivery there are chance to mother to increase the infection due to their traumatized skin and presence of infection and tissues. तो यहाँ पर हमने वेरियस इंटरवेंशन यूज किए थे, जैसे स्ट्रिक्ट हैंड वाशिंग, जो भी क्लाइंट्स को प्रॉपर पेरिनियल केयर और प्रॉपर disposal of the sanitary pads, dressings, contaminated dressings, and demonstrate fundal massage, monitor vital sign, encourage application of set bath, demonstrate application of the antibiotic creams and medications. After providing these interventions, we find their evaluation and monitor the sign for evaluation. Here, after these interventions, the evaluation of this patient is client achieves timely healing and remain free of infection. Means after we provide these interventions, we find in evaluation that there is no infection and clients heal very earlier and healing process is uh, going through well. तो ये था हमारा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट देखते हैं नंबर डायग्नोसिस सेकंड। Here this is a second nursing diagnosis, impair imbalance nutrition less than body requirement. तो इसके देखते हैं फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन असेसमेंट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द nursing process. Here daily weight, bowel sound for presence of hyperactivity, vomiting, refusal of food, fluid and electrolytes. एंड नर्सिंग डायग्नोसिस जैसे कि हमने पढ़ा था, नर्सिंग इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। यहाँ पर गोल होगा क्लाइंट विल मीट न्यूट्रिशनल नीड। नेक्स्ट इंटरवेंशन रेशनल फॉर दिस डायग्नोसिस, एयर इंटरवेंशन एंड रेशनल encourage choice of food high in protein, iron, vitamin C when oral intake is permitted. A rationale of this intervention promote healing process and regeneration of the new tissue. मीन्स हमको क्लाइंट को एक हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी, हाई विटामिन, आयरन डाइट प्रोवाइड करना है जिससे कि हीलिंग प्रोसेस अर्ली हो, रिजनरेशन प्रोसेस हो। नेक्स्ट इंटरवेंशन एनकरेज एयर encourage intake of at least 2000 ml per day of juice, soup and other nutritional intake. इसका रेशनल होगा इंक्रीज सर्कुलेटरी फ्लूइड वॉल्यूम
The next intervention, encourage adequate sleep and rest. Adequate sleep and rest reduce metabolic rate, allowing nutrient and oxygen to be used for healing process. Next intervention, administer parental fluid as indicated. Parental fluid rational होगा, replace fluid loss here. The next intervention, administer vitamins and iron preparation. इसका रेशनल होगा, यूजफुल इन करेक्टिंग एनीमिया. तो ये थे डिफरेंट इंटरवेंशंस टू correct nutritional deficiency and help in early healing process and maintain patient nutritional status. After providing these interventions, we find a evaluation of this nursing diagnosis. Here evaluation, the clients meet nutritional need adequately evidenced by timely bone healing, good energy level and weight gain. Here this is evaluation. देखते हैं इसको. Client meets nutritional need adequately evidenced by timely wound healing, good energy level and weight gain. This is the second nursing diagnosis of this nursing care plan, puerperal sepsis. Next diagnosis number third देखते हैं. Here this is the nursing diagnosis number third, acute pain or discomfort related to body response to infection, tissue edema, erythema. This is nursing diagnosis second. तो इसको फिर से देखते हैं हम. नर्सिंग असेसमेंट प्रोसेस नंबर फर्स्ट. एयर नर्सिंग असेसमेंट, patient verbalize acute pain. Next assessment of the location, nature of the discomfort, assessment of the pain behavior, restlessness, crying, irritability. Next vital sign, sleeping disturbances. These are the nursing assessment. On the basis of nursing assessment, nurse make here the diagnosis of this client here, acute pain or discomfort related to body response to infection, tissue erythema and edema. यहाँ goal होगा to relieve pain and control discomfort. Nursing intervention here and rational. First intervention है यहाँ पर, assess nature of discomfort or pain. इसका rational होगा, aids in identifying the tissue involved in the infectious process. Next intervention nursing second, assist the maintenance of hygiene and warmth. Rational होगा इसका, promote general well-being and healing. Next here change in client position frequently. इसका rational होगा, reduce muscle fatigue. And next देखते हैं here provide comfort measure. Comfort measure promote relaxation and comfort. Next administer analgesics and antipyretics. These drugs reduce fever and pain. Next apply local heal it using heat lamp, sits bath as indicated. इसका रेशनल हो गया यहाँ पर, हीट प्रमोट वासोडाइलिसिस, इंक्रीज सर्कुलेशन टू द अफेक्टेड एरिया. नेक्स्ट एयर इंटरवेंशन, इंस्ट्रक्ट रिलैक्सेशन टेक्निक, प्रोवाइड डाइवर्सनल एक्टिविटीज़. यहाँ पर इसका रेशनल होगा एयर promote positive attitude by relaxation and diversional activity like indoor game, reading magazine, watching television, playing, reading newspaper, magazine, etc. Meditation and yoga also. Next encourage for breastfeeding and suggest breast pump. These prevent discomfort of breast engorgement. के लिए हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एडवाइज करेंगे. यदि ब्रेस्ट फीडिंग अनेबल है तो ब्रेस्ट पंप को हम यूज़ करेंगे. तो दिस इज़ द इंटरवेंशन फॉर दिस नर्सिंग डायग्नोसिस. नेक्स्ट देखते हैं एवेल्यूशन. एयर एवेल्यूशन, क्लाइंट्स रिपोर्ट रिलीफ ऑफ पेन और फील कंफर्ट. दिस इज़ achieved by providing different interventions to relieve pain
and controlled discomfort. This is the nursing care plan, nursing diagnosis number third. Next, take the nursing diagnosis number fourth of nursing care plan, puerperal sepsis. Here, this is the nursing diagnosis number four of nursing care plan, puerperal sepsis, that is a risk of impaired parenting related to interruption in the bonding process and physical illness. This is nursing diagnosis number four. For this basis nursing assessment, the first step of nursing process here, nursing assessment. Knowledge of child health maintenance, parenting skill, education level. Next, readiness for parenthood, emotional response to illness. These are the nursing assessment. On the basis of these assessment, we make a nursing diagnosis, that is risk for impaired parenting related to interruption in the bonding process and physical illness. The expected outcome goals for this diagnosis: clients will assume responsibility for physical and emotional care of the newborn as able air nursing and intervention and rationals provide opportunities for maternal infant contact whenever possible, facilitate attachment मीन जब भी हो सके माता और बच्चे को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना है, जैसे इन्फेक्शन रिड्यूस हो. नेक्स्ट, एनकरेज क्लाइंट टू फीड इन्फेंट इफ पॉसिबल एंड to increase their participation in the infant care as infection resolved. Promote mother attachment with infant means जैसे ही इन्फेक्शन रिजॉल्व हो, एज सुन एज अर्ली पॉसिबल हमको बच्चे को माता से मिलाना है. मीन्स दिस इंक्रीज मैटरनल अटैचमेंट टू हर बेबी. नेक्स्ट, एनकरेज मैटरनल इन्फेंट इंटरेक्शन. प्रोवाइड यहाँ पर इसका रेशन होगा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ बॉन्डिंग. नेक्स्ट, encourage father and other family member to care for and interact with infant. Irrational, encouraging to the mother to know that family is caring for the infant and providing emotional support. These are the nursing interventions. After providing these interventions, we find here the evaluation of the this diagnosis. Here, clients will assume responsibility for newborn care as able. Client express concern with the parenting role. This is the evaluation after providing these interventions. एक बार फिर देखते हैं. हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस था रिस्क फॉर इम्पेयर्ड पेरेंटिंग रिलेटेड टू इंटरप्शन इन द बॉन्डिंग प्रोसेस and physical illness means due to the puerperal sepsis or infection there is separation of the mother and also infant due to infection, and this lead to the poor bonding between mother and infant, and we plan here for this diagnosis. And at last in evaluation we find here the clients assume responsibility for newborn care as able and client express concern with the parenting role. This is the number 4 nursing diagnosis of nursing care plan of puerperal sepsis. आप यहाँ से नोट्स ले सकते हो. दिस इज एक बार फिर देखते हैं. nursing diagnosis number first, you can take your notes for this. Next, nursing diagnosis number second, you also take your notes. Next, number third, and this is last nursing diagnosis of puerperal sepsis nursing care plan. You can also take notes here. So friends, this is the nursing care plan of puerperal sepsis, puerperal infection and postpartum infection. This is very important nursing care plan. तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then send your likes and comments here and share this video with your friends and subscribe my YouTube channel Anand Nursing File.
preparation for the nursing examination, and press bell icon also. Thank you.